start a minute. Yeah, so we have Mr. Kiran More sir with us. Sir, जिस तरीके से आपका contribution है इंडियन क्रिकेट में, you could be easily called sir, really. कंट्रीब्यूशन एसजी फैमिली का है मेरा, तो उन्होंने मुझे बैट दी, मुझे ग्लव्स दिया। आई थिंक उससे खेलने से बाद बहुत फर्क पड़ता है। कितने बच्चों को पता लगा कि that SG existed because you know of course Sami Gavaskar was there and the way you came as a complete SG man, आई थिंक जब मैंने एसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर मैंने बीच में एक बार कोशिश किया था दूसरा चीज़ को यूज़ करने के लिए। हाँ। मैं एक बार यूज़ किया, उसके बाद मैंने बोला कान पकड़े कि एसजी के बिना मैं कोई भी कुछ यूज़ नहीं करूँगा। तो लाइफ टाइम मैंने एसजी का ही चीज़ यूज़ किया, और अभी भी कुछ चाहता हूँ तो मैं एसजी के ग्लव्स से, और बैटिंग ग्लव्स में मुझे एसजी की पसंद है, बैट भी अभी भी एसजी पसंद है। आई थिंक उस बिल्कुल आप देखो पूरे मार्केट में भी एसजी छाया हुआ है। आई थिंक दे मेक ए वेरी गुड प्रोडक्ट। आई थिंक इट्स वेरी मोर देन 100 years old कंपनी, तो बहुत फर्क पड़ता है, एंड दे आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर प्रोडक्ट। एब्सोल्युटली पैशन तो है, पर कभी कभी हैबिचुअल भी हो जाता है। जैसे एसजी का एक कंफर्ट जोन भी है व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग एक एसजी स्टफ, बैट हो, ग्लव्स हो, सॉफ्ट लेदर हो। सॉफ्ट लेदर जैसे पैड्स और ग्लव्स का तो इतना भरपूर बेशुमार एक dominance है। People just prefer SG pads and I know they are the pioneers of this product, so they come up with creation, like it's not that okay ग्लव्स बना के भेजे, ग्लव्स में भी कुछ क्रिएशन बना के भेजे आपने। विकेट कीपिंग में भी हमने जो ग्लव्स बनाए थे तो भी कुछ चेंजेस किए थे, और पैड्स में, बैट में, सब जगह। सो दे ऑलवेज क्रिएटेड समथिंग एंड दे आर द फर्स्ट पीपल टू कम आउट विद समथिंग डिफरेंट। सो जब आप प्रोडक्ट ऐसा लाते हो जो प्लेयर को पसंद आता है, प्लेयर लोग ऐसे नहीं रन बनाते हैं, दे ऑल्सो फील दैट they need to have the proper flow of the bat, जो फील आती है बैट की, जो विलो इंपॉर्टेंट होता है, बैलेंस अच्छा इंपॉर्टेंट होता है, ग्लव्स भी वैसे होते हैं, द क्वालिटी ऑफ लेदर, क्वालिटी ऑफ प्रोटेक्शन यू गेट फ्रॉम द एसजी ग्लव्स एंड पैड्स, एवरीथिंग। आई थिंक वो बहुत मायने करता है। हम लोग बैट, कौन सा बैट, कोई भी बैट उठा के हम लोग मैच रन नहीं बना सकते हैं, इतना आसान नहीं होता। तो उसके लिए आई थिंक when the product also complements with that, so I think SG has been there for so many years, so I think मुझे लगता नहीं कोई आसपास भी है कोई। so for me especially, I think others must have different views, but I think मुझे ऐसा लगता है कि they are one of the best products they have in the market. And besides products, those days when you were doing keeping and all that, सर कितना इनर्स कैरी करते थे साथ में, कितना ग्लव्स होता था, कीपिंग ग्लव्स, बैट्स कितना कैरी करते थे? उस जमाने में इतना पता नहीं था हमको, फिर दो तीन विकेट कीपिंग ग्लव्स कैरी करते थे, एक विकेट कीपिंग पैड। इन द ग्लव्स डेफिनेटली पैड्स एक ही पैड, क्योंकि तभी किड बैग भी छोटे थे, एयरलाइन में अलाउ भी नहीं करते थे हम लोग, तो छोटे एक पैड थे, एक बैटिंग पैड, और इनर्स एक 8-9 पेयर्स कैरी करते थे, क्योंकि आई शुड लाइक दैट चेंज द इनर्स, क्योंकि यू हैव टू रिमेन हेल्दी आल्सो। एक ही इनर्स पहन के आप कितना बार खेल सकते हो, यू स्वेट अ लॉट। सो आई थिंक 7-8 इनर्स डेफिनेटली बैटिंग ग्लव्स आप कैरी करते हो, और बैट उस जमाने में हम 2 कैरी करते थे, ज़्यादा नहीं, अभी लोग 15 बैट कैरी करते हैं। फिर आ गया हेलमेट, कीपर यूजिंग हेलमेट। सो वो आप तो कभी हेलमेट नहीं यूज किए? नहीं, मैंने आज तक विकेट कीपिंग हेलमेट यूज़ नहीं किया, और अभी चाहता भी नहीं विकेट कीपिंग करूँ मैं अभी, क्योंकि अभी देख के ऐसा डर लगता है, लोग ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। पर आई थिंक सेफ्टी इज मस्ट, आई थिंक, एंड इट्स वेरी गुड एक्चुअली, पीपल आर वेयरिंग हेलमेट एंड दे मस्ट वेयर हेलमेट। आई थिंक यू माइट गेट सम मेजर इंजरीज एंड यू कैन हैव प्रॉब्लम्स फॉर योर होल लाइफ। सो आई थिंक सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स। हैव यू एवर, लाइक व्हेन यू आर प्लेइंग, हैव यू एवर क्रॉस्ड योर माइंड कि हेलमेट भी पहनना चाहिए? एक नहीं, बैटिंग के टाइम तो था, पर विकेट कीपिंग के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग हेलमेट पहने, विदाउट हेलमेट ओनली हमने कीपिंग किया पूरे लाइफ टाइम। और अभी बैठ के सोचते थे, आई थिंक वी आर टेकिंग लॉट ऑफ रिस्क डूइंग दैट। आई थिंक सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट वेयर हेलमेट। Sir, when you talk about wicket keeping, what are the basic things you need to become a wicket keeper? When you see a little kid coming, कि instinct होता है, good eye होता है, good reflexes होता है. So what exactly you can see? This kid could be a good wicket keeper, because you have been training a lot of youngsters over the years. कितने सारे? Yeah, wicket keeping is thankless job. It's not a thankless job, it's a tough job. So you opt for the tough job. So tough when you it's a tough area to do the job. But I believe if you come out of that, toughness, I think that's how you're rated the top wicket keeper in the world. So it is competitive world, and wicket keeping is that you need to work on your basics, very important. It's like starting from ABCD, how you catch the ball, your hand-eye coordination, your balance is very key to your wicket keeping.
And if you teach a young kid from properly, I think you can be a wicket keeper, but in wicket keeping you can get a major injuries, and that injuries can affect your wicket keeping. So if it's like a biomechanic of fast bowlers, there might be exception like Malinga or Bumrah. They're different. But Bumrah, when you see his finish, is outstanding. But that biomechanic on wicket keeping also is very important. Your hand and eye coordination, how you collect the ball. So if your basics are correct, you will be injury free, and you will keep wickets at ease, and you will play lot many years, for top level of cricket, because the basics are good. You can wake up in the morning and start keeping wickets, and it'll be easy for you to keep wickets. So that's why we need to work very hard on that. That's why I always push the young kids to be strong on their basics, and if your basics are strong, like Tendulkar, the basics are so strong, Gavaskar, the basics are so strong. That's why they play for so many years. Otherwise, you can be a flashy wicket keeper, you can play for 4-5 years and go home. But if you want to play for longer version, like Sachin Tendulkar has done, so as a wicket keeper also you keep wickets, the basics are strong, and then you will play for longer years, and you will be injury free. So, but ऐसा सिस्टम है कि कोच बता रहे हैं जाके बच्चे को तू कीपर बन सकता है, और rather than a बच्चा going and telling a coach I can be a good I keeper. think as a coach also you can identify some characters in the team that this guy is a very bubbly guy. He wants to be part of the game all the time. He wants to be involved in every ball. So that guy can be a wicket keeper. There are guys who want to bowl and just stand in the long on. But some guys are really want to be a short legger, somewhere he want to do something. He wants to bowl, he wants to bat, he wants to field, he wants to involve in the game. So those sort of characters, you can put them as a wicket keeper. And plus, if the guy is very short, he's trying to be a fast bowler, it's going to be very difficult for him to become a top fast bowler in the world cricket. So he should be a tall fast bowler. So I think those guys you can advise him, why don't you keep wickets, So I think wicket keeping again, it becomes a two-dimension player, If you are a wicket keeper, if you are just batter, you become one-dimension player only. So I think to be an all-rounder, so you keep wickets in the early age, so you become a two-dimension. But कहीं ना कहीं थोड़ा emotionally hurt करता है, because a lot of people has taken wicket keeping as a secondary thing, अच्छा टीम में बैटिंग का जगह नहीं मिल रहा, I'll start keeping and get into the white ball team. ऐसा एक सोच है. I mean, how do you see this kind of mindset which has changed over the years? Because this job is a specialist job, sir. But it's a shorter version of game. T20 is fine. When talking about one days and test cricket is a different ball game. T20 you can take chances because on a flat wicket hardly any ball comes to you. So if you're playing on Wankhede or anything, any other pitches or Mohali, there hardly any balls comes to you. So you're mostly collecting about 15 balls or 10 balls in a match or less than that. So I think odd catch will come, but if your basics are good, you can manage that. But on the one days and test matches, I think you need to have a proper wicket keeper. Even the T20 also, you need to have at least a wicket keeper who can be basic should be a little bit good. He can manage the things. You can't just put a guy who has not kept wickets and he's going to keep wickets. That's going to be very dangerous for him and for the team also. Absolutely. Thanks a lot, sir, for coming on SGTV and sharing your thoughts. मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे. Thank you.